ऑर्डर डेटेड 15/7/2021 15/7 माने 15 जुलाई 2021 मु करथिली डिवोर्स पिटिशन फाइल जुलाई 2020 रे सेतेबेले मु गोटे पिटिशन फाइल करथिली बा आईए कोन गोटे फाइल करथिली जोथरे लिखा हितला गणमाध्यम ठू आम दी जनकर मैरिटल डिस्कॉर्ड मैटर दूर रखा जाऊ दी जनकर मान सम्मान पाई दी जनकर मर्यादा पाई दी जनकर परिवार मान मर्यादा पाई आ आम फैंस मानकर पाई कोर्ट रो ऑर्डर शीट द लर्नड काउंसिल फॉर बोथ पार्टीज आर प्रेजेंट and file their respective hajira. The husband petitioner, namely Anubhav Mohanty, Mo, is present, whereas the wife respondent, namely Varsha Priyadarshini, is absent. Varsha Priyadarshini was absent. Se upasthita nathile. The learned counsel for the wife respondent filed the objection to the petition dated 6/7/2020. Varshankar okila mu jo पिटिशन फाइल करथिली 6/7/2020 रो ताकू से गोटे ऑब्जेक्शन फाइल कले एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 13(1) ऑफ HM Act 1955 बिफोर द लर्नड प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट पटियाला हाउस न्यू दिल्ली मु जो केसटा करथिली पिटिशन फाइल करथिली फॉर इट वाज फॉर प्रोहिबिटिंग द पब्लिकेशन ऑफ कंटेंट्स ऑफ द पिटिशन pleadings, proceedings, documents, or any part thereof published in the media platform and for urgent hearing of the case through video conference. The copy of the objection has been served on the learned counsel for the husband petitioner. Both the petitions are taken up for hearing heard at a length. बुझिले आपण जो गणमाध्यम टू दूर रखिया पाई कि आम खबर को पिटिशन जो फाइल करथिली सेटा आ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे केमती यथा शीघ्र ए विवाह विच्छेद गोटे समाधान बाहरु जहाँ भी ऑर्डर दो जजमेंट तार केमती जल्दी जजमेंट हो दी जन को उचित समय रे न्याय मिलु सेथि पई मु दुईटी पिटिशन फाइल करथिली जोटार सुनानी हैला एट अ लेंथ दीर्घ समय धरिया को सुनानी हैला Paragraph number 2 आइला point 2. In view of the submission of the learned counsel of the counterparties and on perusal of the materials of the case record, it is found that the husband petitioner, being a member of parliament, had preferred this proceeding filed under section 13(I)(IA) of the HM Act 1955 before the learned principal judge family court Patiala House, New Delhi, along with these petitions to एटा मु जो फाइल करथिली दिल्ली रे केस ता सहित एदिरा फाइल करथिली विथ दिस पिटिशंस टू अवॉइड पब्लिकेशन ऑफ देयर मैरिटल डिस्प्यूट इन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया एंड इन द सोशल मीडिया टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज एट द फर्स्ट इंस्टेंस एज द हस्बैंड पिटिशनर सो ऑल्सो द रेस्पोंडेंट As the husband petitioner, so also the respondent wife are the Odia film celebrities, and they have also social and moral value in the public at large. At the same time, being the sitting member of parliament, if their marital dispute shall be published in the electronic print media and in the social media, then that shall cause damage the dignity, prestige, and reputation of the husband petitioner, so also his counterpart, mane respondent wife. But it is vehemently objected by the learned counsel for the wife respondent that after instituting this proceeding before the learned principal judge family court, Varshankar okila मोर जो ऑब्जेक्शन थिला मोर जो पिटिशन थिला कि गणमाध्यम टू आम मैरिटल डिस्कॉर्डर न्यूज को दूर रखा जाऊ दुई जनकर मान मर्यादार रक्षा करिवा पाई सम्मान को रक्षा करिया पाई ताकू वर्षा तांको वकीलंक माध्यम रे कोर्ट रे विरोध करथिले कड़ा विरोध करथिले द हस्बैंड पिटिशनर हिमसेल्फ फर्स्टली instituting this proceeding before the learned principal judge family court Patiala House New Delhi the husband petitioner himself firstly
publish their marital dispute to the electronic print media and in the social media, from which source the wife respondent came to know about filing of case by her husband against her for their marital dispute, for which she preferred a transfer petition before the Honorable Apex Court, and considering the factual aspects, real cause of action, the Honorable Apex Court has been pleased to transfer the same to this court. So, the respondent wife submitted that. वर्षा कहिले petition माध्यम रे वकीलों माध्यम रे कि दिल्ली रे केस फाइल कला परे मु कुआडे प्रथम आम दी जनकर मैरिटल डिस्कॉर्ड को सोशल मीडिया रे आनी थिली. एटा आपण माने समस्त जानि थिबे दिल्ली रे मु केस फाइल करिछि बोली आपण माने समस्त जानिबा को पाई थिबे जेतेबेले वर्षांकर केसटा कटक रे फाइल हेछि बोली प्रथमे न्यूज रे बाजिला ता परे ता पूर्वरु मु ना केबे कोनोसी गणमाध्यम द्वारा ना मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ना प्रिंट मीडिया ना सोशल मीडिया कोनोसी मीडिया माध्यम रे मु काहारी को जणी नथिली कि मु गोटे डिवोर्स पिटिशन फाइल करिछि बोली केही जानी नथिले. बट सी एठी मिछ कहिले. So the respondent wife submitted that when her husband petitioner himself firstly had disclosed about filing of the case and their marital dispute before the electronic print media and in the social media, and restraining the media platform to publish about their material dispute and day-to-day progress of the proceeding shall no way cause prejudice to either of the parties. से कहले मु कुआडे मीडिया को जेहेतु आगे देछि वर्तमान मीडिया उपरे रोक लगेबार कोनोसी दरकार नाही ताधरे कोनोसी फायदा हबार नाही. प्रतिदिन रो प्रोसीडिंग हो प्रतिदिन रो हियरिंग हो मीडिया प्लेटफॉर्म सबु जक पब्लिश करि परिबो मैरिटल डिस्प्यूट उपरे डे टू डे प्रोग्रेस ऑफ द प्रोसीडिंग ताकू पब्लिश कले भी कोनोसी प्रकार रो आउ ताकू अटकेले कोनोसी प्रकार असुविधा हबनी. सॉरी अटकेले किछि माने रहिबनी तो पब्लिश करंतु देखांतु से माने वर्षा मैडम एया कहिथिले. तापर से उठू इन व्यू एटा पॉइंट नंबर 3 पैरा नंबर 3 पॉइंट नंबर 3 in view of the submission of the learned counsel for the wife respondent, it is not disputed that after institution of the proceeding before the learned principal judge family court Patiala House New Delhi, this fact had been published and brought to the media platform by her husband petitioner himself, for which she came to know about the institution of the proceeding. Once again a bald lie by respected madam कि मु मीडिया को प्रथम देछि. Thereafter, she had preferred a transfer petition before the Honorable Apex Court. However, after institution of this proceeding, the wife respondent has also filed a proceeding under Section 9 HMA Act before this court, wide CP number 312 by 2020 against her husband petitioner on 7/8/2020, and that had also been published in the electronic print media and in the social media. वर्षा मो विरुद्ध जो केस फाइल करथिले कटक रे दुईटी गोटे डोमेस्टिक वायलेंस रो गोटे राइट टू रेस्टिट्यूशन रो दीटा जाक भी न्यूज रे बाजी सारथिला पब्लिश हे सारथिला कारण से उक्त लोक जानिबा आरंभ कले आम दुई जनकर डिस्प्यूट चलीछि बोली आ सेटा को मु छणै नि आके. इट वाज क्लियरली एंड ओनली बाय ऑनरेबल मैडम. When the respondent wife is an Odia actress and social worker, and the petitioner husband being a Odia film actor, so also sitting member of parliament, being celebrities, when they have got so popularity throughout of Odisha, it is the exception of the public at a large to know about the fact of their marital dispute, what they have placed before each other through in the electronic print media and in the social media. आमे दी जन जाक पब्लिक फिगर बहुत लोक हमको भल पाती बहुत लोक हमको जानती चिन्हती आम विषय जानिया को चाहती तो एते पॉपुलैरिटी आउ एते संख्यार लोक पब्लिक एट लार्ज तो सेमानकर जानिबार अधिकार भी अच्छी तांको अटकई हब नाही. तो मीडिया सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया ए न्यूज ए सब माध्यम खबर पहुँचवाटा किछि
भूल नुहे तांको अनुसारे पुणी थरे लिखाई तांको वकील ए आर्गुमेंट रखिथिले वर्षा वकील तांको तरफरु ए आर्गुमेंट रखिथिले इट इज नॉट डिस्प्यूटेड दैट द प्रेस is the fourth pillar of the democracy. Undoubtedly, yes. I also agree with this. Press ba media hochi fourth pillar of a democratic country. Amo Bharatara fourth pillar ye. The highest important role of media in our day-to-day life is pretty evident. The media must act as a third eye and keep society aware and informed of what happening around the world. Eta tanko kilo kahichanti. As per the settled principle of law, such burden of the fourth pillar of the democracy to publish and print cannot be snatched away when that has been disclosed before them by the parties or by their respective learned counsel before filing of this petition and proceeding by respective parties. केही अटकी पारिबे नाही गणमाध्यम को बा सोशल मीडिया को केही अटकी पारिबेनी ए मान दि जनकर खबर विषय रे छापिबा पई बा जणैबा पई बा कहिबा पई. At the same time, such electronic print media and in the social media cannot be permitted to scan the day-to-day proceeding of the court, so also pronounce a pre-trial judgment on the oral version of the parties, so also their respective learned counsels, which is the duty of the court to pass the judgment on the basis of oral, so also the documentary evidence of the parties. Of course,